guys, welcome back to my channel. Today video is about how to get rid of pimples overnight or fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will share with you a home remedy today, and in the last I share dermatologist recommended method. I personally use this when I have pimple on my face. It worked very fast, very fast. Let's start. For this you need a bowl, empty bowl, apple cider vinegar, cotton or tissue paper, in a bowl take a small amount of apple cider vinegar. Take a tissue paper, dip it into apple cider vinegar, and apply it on pimple like this. For some time, maybe 2 or 3 minutes. It will clear all pimples very fast. Before applying apple cider vinegar on your pimple, wash your face and also dry with tissue paper. अपने फेस को जो है वो टिश्यू पेपर से ड्राई किया करें या टॉवल से जेंटली, बहुत ही आराम से. Like it. Share my video. I love to share with you. Comments below. Share your home remedy with me. Subscribe my channel and hit the notification bell ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो. Now I share you with you dermatologist recommended method. What they say? 2 tablets of aspirin mix with water. एस्प्रीन की जो टैबलेट्स हैं उनको अपने पानी के अंदर मिक्स करना है और उसको भी इसी तरीके से अप्लाई करना है जैसे मैंने जो है वो एप्पल साइडर विनेगर को अप्लाई किया है, टिश्यू पेपर से या कॉटन से. दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. आई लव यू गाइस सो मच. फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. बाय.